Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has given a stern warning to the rioters who you see on your screens. Speaking in the assembly, Fadnavis said, no rioter who attacked the police, especially, will be spared. The Chief Minister has added the rioters will be punished even if they have to be dragged out of their grave or wherever they are hiding right now. Fadnavis said that there was a rumor on the burning of an effigy and that a holy chadar with regard to how the Muslim community perceives it, was being burnt, and these rumors were not true because many believe that it was because of some rumor like that that suddenly led to aggressive members of the Muslim community who came out on the streets and then the arson violence that happened. This comes, however, after shocking details in the FIR that reports, and this, remember, many of them have come forth, are cops, women personnel from the police force, who said that the mob molested, tried to strip a woman cop as well, possibly multiple women cop. Rioters, according to the FIR, were making lewd gestures, chanting hate slogans and hurling petrol bombs on the cops as well. If this was such a spontaneous protest, how did the petrol bombs suddenly come forth? Opposition, however, has hit out questioning law and order situation in Maharashtra under Fadnavis, accusing the state of fanning communal flames over Mughal Emperor Aurangzeb. 8 rioters of the Bajrang Dal who had surrendered to cops were let off within few hours after the court granted them bail. आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही. बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल. नागपुर की हिंसा की बुनियाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने रखी थी. मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयानात दे रहे थे उससे नफरत फैलती चली गई. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने और ज़्यादा नफरत फैलाई. और जब तक विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी नहीं लगेगी, देश के अंदर इस तरीके के वाक़यात जो नागपुर में हुए हैं वो होते रहेंगे. नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गृह जनपद है, एक बड़े केंद्रीय मंत्री का गृह जनपद है. उसके बाद सारी सत्ता उनके पास भी होते हुए अगर दंगा हो रहा है तो या तो उनके ऊपर बड़ा घोर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद के अंदर इतना बड़ा दंगा हो सकता है तो प्रदेश सुरक्षित नहीं है, और अगर उनके इशारों पे नहीं हो रहा है तब तो सवाल है ही है. लेकिन एक बात सोचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी को कि जहां पर सरकार होती वहीं पे ऐसा क्यों होता है, कहीं और क्यों नहीं होता है.